Hello, dear students. Welcome to our today's revision class. And as we have completed our 3 chapters with different kinds of questions like objective questions, subjective questions, I hope you all are going with the flow. Okay, I hope you all are studying at home. Yes, now you had a great weekend with your family, with your friends. Now let's come back to our today's class and let's come back to our study, different kinds of study. Okay, so now before moving to our today's topics, let me remind you the students about your weekly test. Okay, you're doing your weekly test. I hope all of you had submitted the last time's week test. Okay, it's about the 3 chapters, okay, that we have completed. Okay, student, that is very important. It is very important to submit your weekly test on time. Okay, yes, so now today we are going to start with chapter number 4, that is effects of electric current, and we are going to deal with the objective types of questions. Okay, students, I hope you all are practicing the equations, chemical equation, different kinds of numericals. Okay, at home, keep practicing it. Okay, your board exam is on the way. Yes, and I know all are studying at home. You are not wasting your time. Yes, so let's come back to our today's class. I mean today's chapter number 4, that is effects of electric current. Okay, so first of all, as usual, we are going to deal with the objective kinds of questions, and the question number 1 says choose a correct alternative and it is of 1 mark. Okay, so the first question is electromagnetic induction, which means what? Okay, so now you have to see the different kinds of options, 4 options, and from that you have to choose one option. Okay, now what the first option says, that is charging of an electric conductor. Second, production of magnetic field due to a current flowing through a coil. Option C, generation of a current in a coil due to relative motion between the coil and the magnet. And the fourth option is motion of the coil around the axle in an electric motor. Okay, students, so what do you think, that which option suits the question? Okay, the question is electromagnetic induction, which means what? Okay, so what do you think about it? Which will be the correct option over here? Yes, right, you all are right. That is the generation of a current in a coil due to relative motion between the coil and the magnet. Okay, we have seen the theories related to this इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो फिर कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में कैसे करंट फ्लो होता है, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन. ओके, yes, now the second question says which of the statement given below correctly describe the magnetic field near a long straight current carrying conductor. Okay, so here the 2 options are given. From that you have to choose only one. First is the magnetic lines of force are perpendicular to the conductor going radially outward, and the second is the magnetic lines of force are in concentric circle with the wire as the center in a plane perpendicular to the conductor. Okay, तो आपको क्या लगता, what do you think, which will be the correct option over here? Yes, option number B, that is the magnetic lines of force are in a concentric circle. Okay, we have seen that in a concentric circle how the magnetic lines of forces they were there and how the current flows through it. Okay, with the wire as a center and it is in a plane perpendicular to the conductor, right? Yes. Now the third is the device which is used for producing a current is called dash. It is whether it is called voltmeter, ammeter, galvanometer, generator. Yes, the answer is generator, option D. Okay. Fourth, in the experiment to study the magnetic field due to electric current flowing through a coil, dash would be used to find the direction of magnetic lines of forces. तो यहाँ पे क्या यूज़ किया था, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल.
Okay, so what we have used over here, yes, magnetic needle to show the डायरेक्शन. ओके, हमने देखा है कि कब वो वेस्ट डायरेक्शन में होती है, कब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होती है, तो उसमें क्या चेंजेस आता है. येस, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. नाउ द आंसर इज व्हाट, मैग्नेटिक नीडल. ओके, so fifth one, in the dash appliance, Fleming's left hand rule is not used. इलेक्ट्रिक फैन, मिक्सर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर. किस में नहीं यूज़ होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? ओके, द आंसर इज़ ओवर हियर, द आंसर इज़ कंप्यूटर. ठीक है, बिकॉज ये सब जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, जहाँ से करंट फ्लो होता है एंड लाइक दैट. ओके, यस, कंप्यूटर एक ऐसा है जो क्या है हम यूज़ करते हैं ओके लाइट पे. ओके, सो दिस ऑप्शन सी कंप्यूटर, इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो यूज्ड नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. व्हेनेवर यू विल गेट अ क्वेश्चन पेपर, read the question carefully and after that mark the answer. Okay, yes, now the second question, true or false. First is, the unit of electric power is watt. Yes, is this a correct or wrong statement? The unit of electric power is watt. Right, okay, it is true answer. Okay, now the second is, resistivity of pure metal is more than alloys. प्योर मेटल का जो है वो रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहता है क्या अलॉय से? नो, फॉल्स. इट इज़ मोर लेस देन दैट ऑफ एलॉयज़. ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी जो होता है वो लेस होता है किस में, एलॉयज़ में. तो दिस स्टेटमेंट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, नाउ थर्ड, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट. इज़ दिस अ ट्रू स्टेटमेंट? जब शॉर्ट सर्किट होता है तब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो होता है क्या? नो, राइट. सो दिस इज फॉल्स, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो आंसर इज फॉल्स. सो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट व्हाट हैपन्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट. इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, येस, तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ कहाँ पे होता है? टू डिटेक्ट एंड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. ओके, येस, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, फाइंड ऑड मैन आउट. हियर फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स, जनरेटर. क्या है ये? जनरेटर है. येस, बिकॉज अदर्स रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट वाइल जनरेटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस करंट. जनरेटर से क्या होता है, वो क्या करता है, जनरेटर करंट को प्रोड्यूस करता है. बट ये जो है फ्यूज़ वायर, बैड कंडक्टर जो होते हैं वो, एंड रबर ग्लोव्स, उससे क्या होता है, करंट का फ्लो जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. ठीक है, वो स्टॉप हो जाता है. ओके, येस, नाउ द सेकेंड इज, वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर. व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स? Yes, the answer is thermometer. And why thermometer? You all know that, right? Yes. Third, loudspeaker, microphone, electric motor, magnet. Magnet is the odd man out over here because here others are the device which converts energy from one form to other, while magnet is not used as a device for energy conversion. Okay, magnet क्या होता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. ओके, बट ये जो ऑल द थिंग्स हैं वो क्या है, वो कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. सो मैग्नेट इज ऑड मैन आउट ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द एनालॉजी. ओके, इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थंब जो है वो किसका डायरेक्शन बताता है, मोशन ऑफ कंडक्टर. सो इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर क्या किसका डायरेक्शन बताता है, दैट वी हैव टू राइट ओवर हियर. सो इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? द आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज राइट हैंड इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है. इट इज़ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस.
वोल्टमीटर क्या है? जो वोल्टेज को मेजर करता है वो क्या होता है? वोल्टमीटर होता है. बट हियर यू कैन सी करंट मेजरिंग डिवाइस. जो करंट को मेजर करेगा उसको क्या बोलेंगे? एमीटर. यस, कभी कभी ये जो एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस दैट यू यूज टू गेट, आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही हमें कभी कभी मिलता है, बिकॉज वी रीड अ लॉट. समटाइम्स वन वर्ड व्हेन वी हर्ड दैट, व्हेन वी हियर दैट, व्हेन वी लिसन टू इट, ओके, ये हमारे जो है ब्रेन में जाके एकदम लॉक हो जाता है. तो कभी कभी जो है एट दैट टाइम यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. क्या पता आपको जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही मिले. अभी वोल्टमीटर से यहाँ पे वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो एमीटर क्या होता है? करंट फ्लोइंग डिवाइस. ओके, करंट मेजरिंग डिवाइस. एमीटर, वोल्टमीटर, these are the two devices that you know, right? Yes. Now the fifth question is match the following, and here are some kind of match the followings you are given over here. Let's read the first column. Short circuit, overloading, rubber soled shoes, wire of 3-pin plug for safety. And the column number 2 says insulator, live wire, live and the neutral wire come in contact, many electrical appliances switched on at a time, and earth wire. Okay, so think about it, that which match the following, which match will follow over here? Short circuiting. तो what do you think, which option will go over here? शॉर्ट सर्किट होता है तब क्या होता है? Yes, live and the neutral wire come in contact with each other. When these two wire come in contact with each other, तो क्या होता है? ब्लास्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है. Yes. Overloading, overloading, many electrical appliances switched on at a time. जब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल थिंग्स कभी कभी चालू रहते हैं तब क्या होता है? ओवरलोड होता है. दैट यू नो, राइट. रबर सोल्ड शूज़, रबर सोल्ड शूज़ ये क्या है? इससे क्या होता है? व्हाट इज दिस? इज दिस? यस, दिस इज इंसुलेटर. यस, एंड वायर ऑफ 3-pin plug for safety. द फोर्थ इज व्हाट? अर्थ वायर. ओके, 3 वायर जो होते हैं अर्थिंग के लिए, अर्थिंग, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. Yes. Okay. Different kinds of wire over here. Live wire, neutral wire, earth wire, earthing के लिए जो used होता है. Yes. So here this is the match the following over here. Okay. And ये live wire जो है उसका कोई आंसर नहीं है. ठीक है. Now the next is name the following device which converts electrical energy to mechanical energy. What is the name of that device which converts electrical energy to mechanical energy? That is electric motor. And the second is device which converts mechanical energy to electric energy, that is electric generator. Okay students? Yes. So first of all read the questions very carefully. Sometimes आपको उसका आंसर भी पता होता है बट आप क्वेश्चन जो है वो अच्छे से रीड नहीं करते. So what you have to do, you have to read the question very carefully. It's very easy. Practice every day. As I have already told you that you have to stick with your timetable. Okay, timetable जो आपने आपके लिए बनाया है, that you have to follow and you have to go with the flow. Yes, you have to watch every videos, you have to practice it and you have to write down its notes. You have to make your own notes from that. ठीक है? Okay, thank you.